एवरीवन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। आज हम बात करेंगे नेशनल वुमेन चैंपियनशिप पे, जो कि इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान ने बहुत नज़दीक से कवर की है। और मेरे साथ इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान के फाउंडर्स में से एक फाउंडर तैमूर सुहेल एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। तैमूर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे अब्दुलरहमान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैमूर, वुमेन्स लीग या बल्कि वुमेन्स के जो मैचेस हैं बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में हुए हैं। एक लॉन्ग गैप आया था कि इतनी देर से वुमेन्स ने कोई मैच नहीं था खेला, कोई टूर्नामेंट उनके लिए नहीं था हो रहा। अभी जाके एक वुमेन्स चैंपियनशिप हुई है जिसमें एक बड़ी चीज़ ये थी कि डिपार्टमेंट शामिल नहीं थे, क्लब शामिल थे। सबसे पहले तो और दूसरा आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी टीम ने उसको बड़े नज़दीकी से फ़ॉलो किया, क्योंकि ये वो मैचेस हैं कि हमें उस तरीके से इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलते, स्ट्रीम इनकी हो नहीं रही होती। सो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो जाके कवर करते हैं, उनमें से आपका एक प्लेटफ़ॉर्म था। सो आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं? और जो सबसे पहली बात जो है कि डिपार्टमेंट से क्लब की तरफ आए, सो थोड़ा-सा फॉर्मेट भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड दूसरा ऑब्वियसली देखिए वुमेन्स चैम्पियनशिप ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल से नहीं हुई एंड इट वाज समथिंग दैट वी न्यू कि शायद हो बिकॉज अभी मेंस की फॉर द फर्स्ट टाइम अभी हुई थी। मेंस का अभी ज़्यादा गैप नहीं था बट थोड़ा सा था एंड वी हर्ड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स दैट इट्स गोइंग टू हैपन and it was like necessary to happen obviously। दूसरा ये कि आपके जो winners होते हैं women's का they get the voting right as well in the elections जो आपकी थी, so that's very important and that's one of the reasons कि ये women's championship हुआ है। So overall I would say कि it was a good tournament, not only for obviously KCA Legacy जो final में खेली है but obviously for the other teams as well जो बहुत टाइम से खेल रही है। obviously young teams है, इस्लामाबाद से भी had strikers, Highlanders, लाहौर से भी टीमें थी, क्वेटा से भी टीम आई थी और obviously कराची से भी टीमें थी। तो overall I would like to say कि यार अच्छा tournament था और we got to see a lot of young players playing in this tournament and I think we as IFP as well और मैंने खुद जाकर थोड़ा we enjoyed as well और obviously थोड़ी quality of football आपको शुरू first stages में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती because there's a lot of teams जो इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ बनी थी और खेलना शुरू किया था except for Legacy, कराची और a few teams जो बहुत टाइम से खेली हैं। But I think it's a good step for Pakistani football and women's football as well कि यार we got to see something happen। बिल्कुल ऐसा ही है। सो टोटल वो टीम्स ने पार्टिसिपेट भी किया और आपने भी बताया कि कुछ टीमें इस टूर्नामेंट के लिए ही बनी। अब फाइनलिस्ट पे बात करते हैं, फिर हम बाकी टीम्स पे भी आएंगे। लेगेसी जो कि 9 months बिफोर आई बनी, फुटबॉल फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट है। कराची सिटी की बात करें 2021 में वो बना क्लब। ये दो टीम्स एक कराची बेस्ड है, एक इस्लामाबाद पिंडी बेस्ड क्लब है। इन दोनों टीम्स में हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड नेशनल टीम के प्लेयर्स भी खेल रहे थे, जिसमें कराची सिटी की बात करें नादिया खान थी, जुल्फिया नसीर थी, और अगर लेगेसी की बात करें पाकिस्तान की जो रिसेंटली रिटायर्ड वाइस कैप्टन थी मलिका नूर थी, फिर उसके अलावा जालिया सिद्दीकी नेशनल टीम के प्लेयर्स थे। इन दो क्लब्स में क्या मेन डिफरेंस था, और आपको इन दो क्लब्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, सो हाउ डू यू डिस्क्राइब दीज टू क्लब्स बिकॉज दे वर द फाइनलिस्ट और इनकी प्रिपरेशंस हमें नजर आ रही थी। अगर हम इनके ओवरऑल क्लब की बात करें, जिस तरीके से लेके चला जा रहा था ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दीज टू क्लब्स? First of all, I would like to say Karachi City and Legacy. These are two very good run clubs. Obviously, Fazan Samir, Legacy Samara, and Shazib or Adil Bhai is handling the Karachi City side. I would say the only difference I find was experience. Okay, to be very honest, Karachi City ki level of football it's very different from all the teams that you have played. And uska advantage obviously you have most of the national team. I would like to say that that's the national team that you have for Pakistan women's team because majority of the teams will और लड़कियां वो जाकर national team में ही खेलेगी। So that's good for Karachi City as well, and they've been playing football like since 2021 जैसे आपने कहा था जब से establish हुए and उनकी training भी they like train every day for 2 दफा train करते हैं, एक सुबह और एक रात को। तो उनकी training भी बहुत different है, they have been training for so long and they have been
in the best shape, I would say, in terms of team B, as in players B, fitness wise B, so they have been very good. When you talk about legacy, and obviously legacy just got formed 7-8 months ago, and उनके लिए it's a process. It's gonna take some time. क्योंकि वो साथ साथ यू डेवलपमेंट के साथ साथ काम कर रहे हैं. You have some ex national team players as well. कोई current national team players भी है आप में उसमें. Nazalia जैसे she has been playing with the national team, and obviously you have क्या कहते हैं Noor as their captain who was just took the retirement from the national team as well, and you had Kaya as well that was an overseas Pakistani जो उनके लिए खेली थी, and she also has represented Pakistan before. So I felt that they played well, legacy in what they had in terms of that, and we knew from the starting that Karachi City will win this tournament. But the obviously the prediction was like कि final में कौन आएगा, because tournament से पहले I wasn't sure, to be very honest, because कराची सिटी भी थी, यूनाइटेड भी थी, आपके पास लाहौर से भी अच्छी टीमें थी. But when we saw legacy play, and I was like pretty sure, and my team was pretty sure that इन दोनों का ही फाइनल होगा, to be very honest. And हमने इवन कोशिश की थी कि हम इनके लिए like early stages में वो एक पोस्टर भी बना ले, but sadly we couldn't make it. That how sure we were like ये दोनों फाइनल में पहुंचेंगे. So, but it's really good credit to Pakistani football. Yeah, these two teams are doing very well. Or structure-wise, as a club structure, dono are fantastic, and we need these like of clubs going forward. अगर हम इस पर ना league बनाना चाहे for the women in the future. So I think it's a really good initiative by both clubs. मैं अब एक ऐसे क्लब की बात करना चाहूँगा, हज़ारा फुटबॉल क्लब। हमने देखा है कि हज़ारा फुटबॉल क्लब्स के जो प्लेयर्स की टीम मैंने जो थोड़ा-सा इतना फ़ॉलो नहीं किया ये, लेकिन जितना भी फ़ॉलो किया, उसमें हज़ारा की टीम हमें एक यंग टीम नज़र आ रही थी, और अगर हम हज़ारा की फैसिलिटीज़ की बात करें, उनको उधर उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह वो आके खेले, सेमीफ़ाइनल खेले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो उनके कोच थे वो पाकिस्तान मेंस नेशनल टीम के करंट प्लेयर भी हैं। सो आप अकॉर्डिंग टू यू, आपने हज़ारा के मैचेस देखे, सो कौन टॉप प्लेयर आपको हज़ारा क्लब से नज़र आया, और आपको उनका जो टाइप ऑफ प्ले है, स्टाइल ऑफ प्ले है, वो कैसा लगा? सो I'll be very honest with you, because मैं I've know Hazara को I've seen a bit, थोड़ा बहुत देखा है मैंने खेलते हुए, because as I said हमारी एक पूरी टीम होती है, and I don't usually go to each match. But what I would like to say about Hazara is that they are very young girls, like you said, बहुत अच्छी, they are talented, and obviously they don't have the facilities जो आपके पास कराची सिटी के पास है and आपके पास लेगेसी के पास है. आई थिंक क्रेडिट इज ड्यू टू द कोच रजब अली, जिनके सामने इंटरव्यू भी किया था. वो भी ये बता रहे थे कि यार फैसिलिटीज बिल्कुल ही नहीं है, ग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है उनके पास, और ऑब्वियसली उनके पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था ट्रेन करने के लिए. तो आई थिंक टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड दे नीड अ प्रॉपर ग्राउंड, ऑब्वियसली दे नीड फंडिंग, प्रॉपर स्पॉन्सर चाहिए टू हेल्प द गर्ल्स ट्रेन एवरी डे, उनके लिए कम्पिटिटिव मैचेस भी हो. एंड दैट्स व्हाई लाइक emphasize मैं करता हूँ that we need a league, like not only for men's and for women's as well. And women's का I feel Karana league is more simple than men's, because men's की league बहुत complicated हो जाती है, because there's a lot of teams. Women's का बहुत straightforward होगा अगर PFF इसको देखती है. So I believe right now the best thing is that we can hope and pray कि कोई league का system establish हो, कुछ structure बने, so that ये छोटी जो teams है ना, उनको किसी तरह कोई स्पॉन्सर या उनका कोई क्लब स्ट्रक्चर बने, दे स्टार्ट प्लेइंग रेगुलर फुटबॉल, और उनको भी बेटर से बेटर कोचिंग भी मिले, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले खेलने के लिए. ऑब्वियसली सब लड़कियों के लिए ऑब्वियसली हर जो खेलता है फुटबॉल उसकी ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे एट द एंड ऑफ द डे. तो होपफुली इस पर कुछ हो सके, बट आई डिड लाइक टू गिव क्रेडिट टू हज़ारा कि वो सेमीफाइनल्स तक पहुंची, एंड दे ट्राई very best. Obviously, they were playing against a very informed Karachi City. So, but I think it was a good tournament for them, and proud for them. They also got, I think, the Fair Play Award awarded by the PFF, which was a very good initiative, and उनको थोड़ा बहुत cash prize भी मिला था. So yeah, I think I'm really proud of how Zara played and how good they were in the later stages. एग्जैक्टली ऐसे ही
हमने इन 3 क्लब्स की बात कर ली है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-सा क्लब जो कि सेमीफ़ाइनल्स राउंड तक नहीं पहुँच सका, लेकिन वो उस क्लब में पोटेंशियल है, कौन-सा ऐसा प्लेयर है उन टीम्स में से? सो एनीथिंग जो आपने कवर किया हो और जो क्लब आपको लगा हो कि फ्यूचर में जाके ये अगर इनको चांसेस मिले या जैसे कि आपने बात की अगर आगे जाके भी लीग्स होती हैं, सो वो क्लब या उनमें से कोई प्लेयर आगे जाके उनमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके अच्छा कर सकते हैं? हम्म। अ, अ, 2-3 टीमें थी। एक तो TWK थी फ्रॉम लाहौर। उनकी आई थिंक कैप्टन थी अनुषा, शी वाज प्रीटी गुड। I've seen her play थोड़ा सा। I liked her game and they had a good team, they have a good structure as well। And I feel कि यार लाहौर की गेम अच्छी है when it comes to women's football as well, and she played really well and I think she has a future. If I'm not wrong, she has maybe represented Pakistan before. I could be wrong, but I'll double have to double check that. And she's one of the players that I really liked. The other two teams that I found that maybe they can improve and maybe make the semi-finals next जब भी cup होता है. एक तो इस्लामाबाद से टीम है दोनों। एक है स्ट्राइकर्स, which is also coached by one of our founding members, Adil Bhai. He's a data analyst. तो उनने उनकी टीम है एंड उसमें से उनकी भी कैप्टन थी। आई एम सॉरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। but she is the captain of the strikers and she was really good as well. She's very young as well. वो बहुत अच्छी थी, she was really good with the ball, uh, with her feet as well, and I was impressed by her as well. I think she's very young, I think 15, 16 years old. उसके अलावा we had Smurfs. Smurfs obviously is a very big club in Islamabad. They mostly focus on futsal, and but the women's team obviously it's like नजर आता है कि they need some time. They need to practice more और थोड़ा बहुत खेलना. These are very young girls. उसमें से there was a player, I think her name was Armani, and she was number 11, and she was the, I would say, the standout player of Smurfs. I think she's also the captain of Smurfs team. So she was one of the players that we covered as well. हमारा data post भी हमने उस पर डाला था. If you go to Inside Football Pakistan, आपको उसके stats वगैरह भी नजर आएंगे. Lastly, I would like to say in terms of another team as a whole, I feel it was really good, which was Highlanders. Highlanders is coached by Murtaza Hussain, who's also an ex-Pakistani player, and अभी मेंस के चैलेंज कप में भी उसने खेला था. तो उनकी ओवरऑल टीम इज वेरी गुड, देयर वेरी अटैक माइंडेड एंड थोड़ी aggressive भी है, which makes sense. But I like their football and I believe ये कि इन जैसी टीम है ना, they need time, obviously they need the proper structure अगर उन्हें खेलना है. एंड लाइक मैं आपको फिर एक ही बार रिपीट करूंगा कि वी नीड अ लीग. तो as soon as लीग आएगी, आई फील कि these guys can play week in week out. इनको अगर थोड़ा सा स्पॉन्सर मिलेगा, थोड़ा सा कैश इन आएगा, अपना क्लब स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर करेंगे, तो आई बिलीव कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें. होपफुली कुछ ना कुछ ज़रूर हो इनके लिए। होपफुली. होपफुली कमिंग टुवर्ड्स द टॉप प्लेयर्स, वी ऑल नो के गोल्डन ग्लव्स तो निशा अशरफ हैं और या. टॉप स्कोरर ईमान मुस्तफ़ा है। ईमान मुस्तफ़ा पे मैंने बहुत लोगों से सुना कि जिसने भी कवर किया कि ईमान हम्म. मुस्तफ़ा इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। ईमान मुस्तफ़ा टॉप स्कोरर भी रही हैं। सो ऐसा ही है. how do you describe Iman Mustafa? मतलब you have followed him, you have covered the tournament. So how potential Iman Mustafa is and how it can be a big star for Pakistan in future, hopefully. Yeah, I honestly believe because when we start covering legacy ना, there were a lot of players and इमान का name हमारे सामने इतनी जल्दी नहीं आया था until the final rounds. So we saw her play and she's very different because उसकी जो build type है, she's very tall, she's very strong. दूसरा है कि she's very good holding the ball. ठीक है, and that kind of profile I don't think आपके पास अभी कोई पाकिस्तानी फुटबॉल में है, in the local players at least. So she's very surprising, and the most surprising fact is that KR wo he managed to outscore Nadia, Zulfia, आपके पास काया वगैरह जितने भी टॉप प्लेयर्स थे, managed to score all of them. Although आपको पता है कि जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें अच्छे खासे जुल्फिया ने गोल मारे थे, around 21 goals. But still, looking at the sort of final round, she still managed to score all of them. So I think she has potential. She's very young as well.
And if I am the coach of the national team, I would at least call her to the camp. Not maybe, take her maybe to the SAF games, totally depends. But I think at least calling her to the camp would be something, would be a good initiative because she's the top scorer and she has a potential. She can go ahead और अपनी गेम थोड़ी बेहतर कर सकती हो. But for that, we have to arrange the camp first. Camp Uh, हो Camp, from what I know, because उस पे PFF अपडेट officially, लेते हैं उस पे हाँ, बाद में आते हैं sure, टॉप sure. 10 players from the tournament. Top टॉप 10 players from this tournament जो आपको 10 लगता है player 10 होने नहीं तो 5 कर ले चाहिए. टॉप 5 कर ले यार टॉप 5, लोकल लाइक मैं ऑर्डर प्लेयर्स नहीं, आप ऑर्डर तो नहीं बताऊंगा, लाइक आई वुड से कि या आप उसमें से ऑर्डर हिसाब से देख लें. यार आई वुड से एक तो first of all it should be Iman, top scorer थी, she would be in the team. I would go for Kaya as well. I would go for Nadia. Soha is someone really good. She's very underappreciated because ज़्यादातर उसको नहीं देखते हैं. And lastly, I would say थोड़ा controversial है. Maybe लोगों ने ज़्यादा देखे नहीं. I would go for Marsha for Karachi United. She was good. She was really good. जब भी मैंने उसको देखा, she scored a couple of goals as well, and she played really well. So these are the players that I would say ke are certain, and hopefully they all of them would probably be called up for the national team. ओके सो अब अपडेट की तरफ आएंगे व्हाट्स द अपडेट ऑन पाकिस्तान वुमेन कप के हम सैफ So में पार्टिसिपेट कर भी we रहे हैं कि नहीं from what I've heard, and obviously तब आपने अगर फाइनल देखा हो तो शाहरुख सर ने भी हमें बताया था कि सैफ कप खेलने जा रहे हैं वुमेन्स टीम. तो इंशाल्लाह अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई फ्रॉम द पीएफएफ, बट फ्रॉम व्हाट वी नो दे आर प्लानिंग टू गो फॉर द सैफ कप. And if that's the case, then hopefully we'll see a camp very soon in September, because I think October में आपके पास SAF Cup है. So I'm very interested in see कि आपके पास कौन से players जाते हैं for the SAF Cup, because the coach, which is Adil Bhai, he has a good philosophy. I think it's mostly compared to Stephen, because they are very क्या कहते हैं, want to include diaspora players, which makes sense obviously because local talent or diaspora players का mixture करना चाहते हैं. But I think Adil is mostly in favor of diaspora players because women's की obviously very hard to find good women players to play for the national team. So I think he wants as many diasporas as he can, and I'm trying to see कि चलो diaspora तो आ जाएगा. I want to see which local players go ahead, because Karachi city से mostly आपके जितने भी just locals हो गए वो तो I think probably would be in the team. उसके अलावा you have legacy से, that's the tricky question. Nazaria तो जाएगी. I feel Nazaria will be in the team. Kaya and Marsha or Iman, like these are like 50-50 for me. It depends on the coach. अगर उस type के उसको players चाहिए. But I'm hopeful कि ये तीनों को call up मिल जाए and they go to the camp at least and see कि final selection में वो select होते हैं. okay so like hopefully we are seeing a Pakistan women's team playing after a Inshallah, after long very time. long time, yeah. Yeah. So thank you very much, Teymoor, for joining. And you guys are doing a great job covering Pakistan football from like closely follow कर रहे हैं आप लोग like we are everyone are here to promote sports in Pakistan और हम तो पूरे ओवरऑल स्पोर्ट्स पे करते हैं लेकिन जिस तरह आपने पाकिस्तान फुटबॉल कवर की है लास्ट मेंस चैंपियनशिप भी कवर की थी वुमेन चैंपियनशिप भी की है बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इवेंट्स एज वेल एंड थैंक यू वेरी मच सो व्यूअर्स होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो शॉर्ट सी इंटरव्यू था आपने एंजॉय किया होगा फिर मुलाकात होगी फिर बात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज